थोड़ा ध्यान से, थोड़ा ध्यान से, हाँ। बिकॉज सौरभ सर जो है उनकी भी तबीयत खराब हो गई है। हेंस आई एम सेइंग कि हाँ, एक मिनट, ये मेरे को ऑडियो का आउटपुट ये मैं यहाँ से ले लेता हूँ। ये मैं एक जी, can you hear me? Yes, but I think चलो there's चलो मैं some, yeah, but I think it can get better. बोलो बोलो कुछ तो करो। मेरे यहाँ पे गड़बड़ हो गई है क्या? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ हाँ, कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है। I was just testing the desktop bit. We'll just kick it off, हाँ, फिर जनता आएगी, धीरे धीरे आने दो, and just Cool. start the stream. इसको जल्दी जल्दी डिस्कशन करते हैं। How are things, Sandhya? Everything's going well? Good, yeah, well, all good. So happy to know that your event was a super success. You should have come. I would have any which ways introduced you to a lot of other founders. So we did a Yeah. curated mixer, Hmm. in which we basically got only people who had revenue of more than 1 CR, and or basically people who are funded. This is a Hmm. multi city event anyways. Yeah. So मेरे ख्याल से अभी तो धीरे धीरे बैंगलोर और बॉम्बे, बैंगलोर में मेरे ख्याल से ज्यादा ज्यादा मतलब देयर बी अ लॉट मोर पीपल whom we are expecting, बट Yes. आई थिंक इस बार हम थोड़ा सा और क्यूरेट करेंगे यार। हमारी भी गलती हो गई, हमने ना 40 का एक्सपेक्टेशन रखा था, एंड अराउंड 100 people Hmm. turned up. So I don't know whether it's a good thing or a bad thing, because a lot of people were saying कि यार मैं तो सारे लोगों से मिल ही नहीं पाया। ठीक है, Hmm. आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है when it comes to events and all about these kind of things? Do smaller ones Being do good, better I for think. you, or Yeah, I think means the kind of format you followed. Like I believe that such kind of formats work. With when there's the mixer, it becomes easy for everyone to connect with each other and understand, share their challenges, etc. But I think largely events like this work, and people do enjoy network. I mean, they do look forward to stepping out, meeting more like-minded people. So yeah, I think as many as events we are doing largely in this space post pandemic, but even then the importance of offline events is only increasing. नहीं नहीं, ऑफलाइन इवेंट्स तो हम कराएंगे यार। मैं बोल रहा हूँ छोटा कराना चाहिए, बड़ा कराना चाहिए, 10 लोग का कराना चाहिए, या फिर 100 लोग का कराना चाहिए? आपको क्या लगता है? 10 तो कम है, but I think 50 to 60 is a decent 50 to number 60 for is people to decent come. ना? हम्म 50 to means more than 50 means 50 to 100 wala bracket is also good. If it's 50 to 60, lot of people can, let's say, lot of people can connect with each other. But like up to 100 is also good enough. उसके ऊपर होता है तो हाँ थोड़ा ज्यादा हो सकता है. But 50 to 100 is good. आप लोग का नेक्स्ट इवेंट कब है? Abhi we have kind of halted our series a bit, so we will resume it soon. But means the dates are yet to be finalized. करो यार, अभी तो आप लोग का एक्सेलरेटर फंड भी आ गया, अब तो आप बम फोड़ रहे हो। And that's why a lot of things going on. But yeah, we will soon resume the series. या चलो, आई थिंक चालू करते हैं यार। एक मिनट, so let me just share my screen and we'll just kick it off. I think there are people who are joining on YouTube as well. और मैं यहाँ पे बस पोस्ट कर देता हूँ, and people should start joining in. लैपटॉप भी मेरा थोड़ा स्लो हो गया है। एक मिनट, जस्ट होल्ड ऑन ना, जस्ट होल्ड ऑन।
Okay. Um, Okay. Let's just kick it off. School. So hello guys, welcome. मेरा चेहरा आज उधर है. So, so welcome guys to the 12th edition of the Builders Club Live. This is a Shark Tank special where we analyze Shark Tank companies which are pitching on a week-on-week basis. Around हर um, अराउंड 6 से 12 कंपनीज तो मतलब 6 एपिसोड्स में अराउंड 12 से 13 स्टार्टअप्स को तो हम एनालाइज करते हैं हर एपिसोड मेरे ख्याल से 3 एपिसोड्स 3 स्टार्टअप्स आकर के पिच कर रही हैं एंड वी आर डूइंग दैट इन दिस स्मॉल सीरीज कॉल्ड द शार्क टैंक स्पेशल ऑफ द टीबीसी लाइव आई जस्ट शेयर माय स्क्रीन एंड देन we'll just kick it off. um, एक मिनट. Bharat, in case somebody else was also joining, let me know because I don't think anybody has joined. अच्छा भारत खुद ही अभी join कर रहा है. think Yeah, there Bharat was dropped off. somebody else was also supposed to join, तो वो join करेगा आराम से कोई दिक्कत नहीं है. But I think we'll just kick off our screen share. Yeah. आप शार्क टैंक फॉलो कर रहे हो संध्या? So I think on and off, yes, means I've not seen all the episodes so far, but yeah, whenever I find time, to matlab, if not when it's streaming, but I do watch otherwise. नहीं नहीं अभी तो स्ट्रीमिंग का तो खैर क्या ही है. Okay, so for all of you guys who don't know, and let me just check. Yeah, this is the one which is being shared. So for all of you guys who don't know, we basically are one of the largest startup founder communities globally. We have around 75,000 odd builders. We do a lot of events. Currently, there is an IP called Investopad. There's an event called Investopad, which is happening across 3 cities. The Delhi edition just happened yesterday and it was a massive success. We had around 100 odd founders who dropped in for an evening of conversations and networking with investors from the city. We had a few investors also flying in from the US for this one. On Bangalore one is going to be a little bit more special. In this one, we also got Professor Dhruvnath to do a small book signing. We'll share the pictures and experiences on social media, especially on LinkedIn. So if you people don't follow us, please do so. You can just search for the Builders Club and you'll be able to find us. Um, so, Aj, again, we'll start off with the startup news of the day. Uh, ये महीना थोड़ा सा ठंडा गया है वेरी फ्रैंकली फॉर ऑल द पीपल हु हैव बीन रेजिंग फंड्स बिकॉज total around less than $100 million were deployed, just $84.5 million. इसमें से 4 डील तो $60 million is just 4 deals which are in the growth stage, and then there are only 7 deals which have happened worth $20 million, $25 million in the early stage. So growth stage में Blue Smart raised funds, $25 million. Then there was Viz Freight. This is probably the second round in the past month or two. They're a warehousing and shipping management firm. They raised $15 million. And then there is Move and Sync, which is a cab hailing service to enterprises. They raised $15 million. Then there was, अच्छा मेरा screen share नहीं हो रहा है क्या? I'm sorry. You guys should have told that my screen was not shared.
Yeah, yeah. Sorry. Yeah. या कोई बात नहीं. um We can and see now. yes, so yeah. So yeah. So Move and Sync raised $15 million, which is a cab hailing service to enterprises. Then there is Aqua Connect, which is an aquaculture platform. Fishery, they raised $4 million from S2G Ventures. Then there is Arzu, which is a retail focused digital inventory platform and boat. इन दोनों ने भी उठाया है, but both of these are undisclosed कि कितना उठाया है, किससे उठाया है. And probably ये थोड़ा सा debt का भी है. So both probably raised a little bit of debt in this round. Coming to early stage deals, so Grow Indigo, which is an agri marketplace, they raised $8 million. P0, which is into AI based security, they raised $6.5 million. Electrify Mobility, which is basically an EV asset management and leasing firm, they raised $3.02 million. Then there is Black Opal Group, which is just homes. They are into asset management. They raised $3 million. Algo Bio, which is algorithmic biologics, which is molecular testing startup. There's again a deep tech in the health tech domain. They raised $2.5 million. There is Clear Trust, which is a new age ad tracking and fraud detection platform. They raised $1.9 million. And then there's Mom's Home, which is a D2C sustainable baby essential startup. They raised 5 crores. अगेन इसमें अगर कुलमणि और सौरभ दोनों ही आज, सौरभ तो खैर अभी बीमार है और कुलमणि इज अ लिटिल बिट टायर्ड बिकॉज ही इज करेंटली इन ट्रांजिशन. So I think we would have gotten a little bit deeper into the funding news all a bit, but I think we should not waste time because we want to focus a little bit more on the startup news, on the Shark Tank pitches which have been happening. And Mridul and Sandhya, we're happy to get your inputs in this. City-wise breakup of the deals which have happened. Bangalore में 5, Delhi में 4, Jaipur, Mumbai और Chennai में 1, 1 and 2 respectively. Moving on to the companies which have pitched and in Shark Tank. So मेरे ख्याल से टोटल पिछले हफ्ते हमने 18 स्टार्टअप्स को एनालाइज किया था. इस हफ्ते हम लोग 20 स्टार्टअप्स को एनालाइज कर रहे हैं. व्हाट वी आर गोना डू इज वी आर गोना गो स्टार्टअप बाय स्टार्टअप, एक एक की वेबसाइट खोल करके उनको थोड़ी सी स्टडी करेंगे. एंड संध्या, मृदुल, भरत, एनीवन ऑफ यू हैज एनी कमेंट्स ऑन ये कंपनी कैसी लगती है आपको, क्या करती है? अगर आपने एक्सपीरियंस किया है तो इवन बेटर. एंड फॉलो यू गाइस हु आर फॉलोइंग अस ऑन यूट्यूब, इन केस यू पीपल want to comment on anything. I'm also keeping an eye on the chat. Unlike the last time, is but I think we missed out on looking at the chat on YouTube. Thanks a lot, Shivraj. So in case, please leave a comments below and ask all your friends also to subscribe if you believe that I'm underrated. um, तो चलो एक एक करके चालू करते हैं. So let's start off with Zorko. So Zorko, they came in. It's a food brand. They basically were looking for a 1.5 crore for 1% equity. Incidentally, मैंने इनका pitch देखा YouTube पे. ये करती क्या है मैं वो भी बोलता हूँ, but let me just open yep, Akash has joined in. So Zorko, yes. So Zorko क्या करती है? They are a franchise. They basically are a tier 2, tier 3 market में, मतलब जो थोड़ा सा the places where the McDonald's and these things are not there, वहां पे ये लोग QSRs, quick service restaurants खोल रहे हैं. And their model is a franchisee business. इन्होंने 17 महीने में 150 फ्रेंचाइजीज बेच दी हैं अपनी. They're doing around 30 CR के आसपास का रेवेन्यू right now. I saw their pitch. काफी इंटरेस्टिंग स्टार्टअप है because I think what they claim to do is ये बोल रहे हैं कि यार हमारा आप अगर हमारी फ्रेंचाइजी लेते हो तो आपका सेटअप कॉस्ट काफी कम होगा और आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट उससे भी ज्यादा कम होगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू आवर एसओपीज वी प्रोवाइड यू विद ऑल द रॉ मटेरियल्स एंड ऑल. आपका जो मैन पावर लगता है कोई भी रेस्टोरेंट चलाने में, यू विल नॉट रिक्वायर मोर देन 2 people टू रन योर ओवरऑल स्पेस, एंड देन विल ऑल्सो हेल्प यू ड्राइव ट्रैफिक एंड एवरीथिंग.
इनका जो आई थिंक अमन एंड रितेश वर बोथ इंटरेस्टेड in putting the money in, but last moment में उन्होंने हाथ खींच लिए because the founders were saying कि यार आ, मैं पैसे की जगह आई वुड वांट योर कमिटमेंट ऑफ टाइम फ्रॉम अमन गुप्ता एंड रितेश। दे सेड कि यार सर 20 घंटे मेरे को साल के 20 घंटे दे देना आप अपने। And Aman basically refused to give a commitment on the number of hours that he was going to go in. Otherwise, probably they would have gotten funded. क्या मतलब? What is your take, Mridul, Bharat? Anybody? Hi, Akash. You also joined in finally. क्या लगता है? What is your take on this company? कुछ मतलब सो आई थिंक मेरे ख्याल से एक प्रॉब्लम जो इन लोगों ने ऑल द फाउंडर्स हैड पॉइंटेड आउट वाज दैट कि यार आपको अपने धंधे के ऊपर तो फोकस है, बट आपका जो ओवरऑल ब्रेकअप है इन टर्म्स ऑफ द अमाउंट ऑफ मनी दैट योर franchisees are making, 50% of them are profitable, but the next 50% are either breaking even or are at losses. But the founders of Zorko's focus is still on profitability and growth. तो ये अपने फ्रेंचाइजी ओनर्स के बिजनेस के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। So that is one bit which they had, but these people are growing fairly rapidly. Sandhya, Mridul, Akash, anybody of you have any comments on this one, or we'll probably move on to the next one. Yeah, I Sandhya. think I agree with you on this. I did see the pitch, and they were very aggressive in terms of opening the franchises rather than focusing on it. So it was more like quantity over quality. But I think on a macro level, they were definitely doing good. They were doing amazing revenue. But yes, as you mentioned towards the end, I think they didn't need funds वही as much they प्रमोशंस के लिए आए needed थे मुझे लग रहा है। the mentorship, yeah, हम्म। and their expertise, because they came from a very small city, so maybe they did not have access to enough mentorship and हम्म। guidance. So yeah, so then they were more bullish about their time rather than funds, and hence they couldn't crack the deal. But I think overall they could have otherwise. And maybe if we look from their position, maybe they did have funds and they just needed their time, and they were okay to barter with it, and to maybe Yeah. go let the deal go away if they don't have the time in hand. So yeah, but overall I think they're doing well on a macro level. But yeah, on a more granular level, they need to focus on their specific franchisees too. या नहीं नहीं एब्सोल्युटली यार, आई थिंक वही है इनका। ये जहां से आते हैं वहां पे दे ऑल्सो वांटेड टू सी कि यार रमन गुप्ता धंधा करता कैसे है। आई थिंक दैट मेंटरशिप फ्रॉम दोस काइंड ऑफ पीपल ना, कि अगर कोई कमिट करता है 20 घंटा, वो एक्चुअली में इनवैल्यूएबल है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि यार ये बंदे दोनों बहुत स्मार्ट है। बोथ ऑफ दीज गाइज आर वेरी Yeah, स्मार्ट। बोथ ऑफ दीज गाइज आर रियली, दे न्यू व्हाट दे वांटेड। ठीक है, उनका ऐसा नहीं था कि यार correct. पैसे के पीछे भाग रहे हैं कि सर मेरे को इतना पैसा चाहिए। उनका ये था कि यार लेट्स सी व्हाट वैल्यू दैट वी कैन गेट फ्रॉम हियर। आकाश, यू हैव समथिंग टू से? Yeah, yeah. So I think the field what they have, like what they are in, right? This field is actually like extremely good. Actually, if you see in US, right? I'm not like sure of the exact number, but as per my, like as per what I remember, I think one third of the food actually comes from like from the same domain, which is basically हम्म। QSR, right? In हम्म। US. But in India, हम्म। the numbers are fairly very low, which is around 3 हम्म। 4%. So what हम्म। like when I read a lot of reports, right, what I see that this number is basically bound to grow. So in हम्म। terms of the field, what they have basically pegged, right? So the CAGR growth would be like extremely fast. I think the problem in India is, of course, that the customers here are slightly price conscious. That is the first thing, and the second thing is also the taste. I mean, like as long as you have basically good taste, right? Then the person might actually come back to you as long as the pricing is also making sense. So in हम्म। terms of the domain, I think that's I mean, it's a very like fast growing thing. ये तो है यार। मैं तो मैं मानता हूँ अगर आप ढंग से एक फ्रेंचाइजी का आपने मॉडल क्रैक कर लिया तो उसको स्केल करना बहुत आसान है। मतलब ब्रांड Right, ढंग का right, अगर right. बन गया आपका, आपने अपना नीश फिगर आउट कर लिया। Hmm. प्रॉब्लम वही होती है शुरुआती 0 to 1 जर्नी में। फॉर एनी फ्रेंचाइजी दिक्कत वहीं पे आती है आपकी, कि आपका ना वो पहला पहला फ्रेंचाइजी सक्सेसफुल करना, और वो सीक्रेट सॉस जो बोलते हैं ना, कि आपका आपका बेसिक मॉडल क्या है जिसके बेसिस पे आपका धंधा आ रहा है। अगर आपने वो क्रैक मार लिया तो फिर चीजें बहुत आसानी से मूव होती हैं। ओके, मूविंग Right. ऑन टू द नेक्स्ट वन।
ट्राम्बू। सो ट्राम्बू इज कश्मीर विलो बैट्स। इसमें एक्चुअली में अमन और पीयूष बंसल ने पैसे डाले। 30 लाख की इक्विटी मांग रहे थे, 3%। 30 लाख मांग रहे थे 3% इक्विटी के लिए। फाइनली 30 लाख 4% इक्विटी में हुआ है। दे मेक कश्मीर बैट्स। तो देखे जरा इनकी वेबसाइट आजकल तो। या लीगल ट्रबल। वाह, ये क्या हिसाब है भाई? कश्मीर Yeah, सूड this द news शो। came out recently. व्हाट हैपेंड? क्या So I सीन think है one of भाई? their vendors, so they claim that they don't have any vendor and they do have their own manufacturing, but they do have a vendor and that particular vendor has sued the show. And not the show, but Uh, these two young founders. oh, so they are saying the Trambo brothers claim to be the exclusive manufacturer of the Kashmir willow cricket bats, but that's not true. So tell you that these have caused a severe jolt in the अच्छा, बाकी लोगों का धंधा बंद हो गया वहां पे जाकर उन्होंने बोलते हैं सर हम अकेले हैं। अच्छा, CBMAK members. So this is the Cricket Bat Manufacturers Association of Kashmir. हाँ, so they have basically highlighted a superior quality. हाँ, तो basically Kashmir bats are the best, said to be one of some of the best bats for cricket. और सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से अच्छे वहीं से आते हैं। और यहाँ पे इन लोगों अच्छा तो इन लोगों ने मार्केटिंग में मतलब ये कर दिया नहीं। हम्म। Yeah. तो पैसे तो चलेगा। अब देखो इनको शायद डील तो हो गई है पर शायद पैसे नहीं मिलेंगे। ये वो वाला केस है जो रिमेम्बर द शार्क टैंक इशू व्हिच हैपेंड द लास्ट टाइम आल्सो कि पीपल यूज्ड टू से कि Yeah. यार Yeah. आपने डील कर दी लेकिन पैसे नहीं दिए। मेरे ख्याल से इनके साथ भी ये होने वाला है कि इनको पैसे शायद नहीं मिलेंगे, प्रमोशन भले ही मिल गई हो इनको। Yeah, but they've तो got their share of marketing anyways, so they're हाँ going back मतलब with देखो, something at least. या ये तो देखो वही वाली बात है ना कि now that they are on Shark Tank, irrespective whether there has been lawsuit or not, आई थिंक इनका डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा। इनकी इनकी इंक्वायरीज तो एनी विच वेज विल गो अप, राइट? My problem is that when they will raise the next time, right? I mean, how would you trust the person, right? I mean, see the biggest problem in this is that there is no moat here, right? If you can make a या bat, right, there is no moat in making bat. How can यार you come to a मोट show तो like आपका रॉ this and मटेरियल का होगा ना। यहाँ पे इनका लेकिन मैं मोट रॉ वही कह रहा हूँ मटेरियल है। ना दो बच्चे मतलब वेरी यंग गाइज टू वेरी स्मॉल गाइज हाउ कैन दे बिल्ड मोट राइट हाउ कैन अ पर्सन हु हैज मोर मनी who has bigger name in Kashmir can't do it. I mean, I don't see हम्म। there's a moat, right? I mean, if you don't हम्म। have a moat and then you claim that we are the only manufacturers, I think there's a, I mean, I feel that next time when they will raise round, right, there will be questions on the basically on the thought process of the founders. I mean, that happens with a young person that they get they या basically या claim some things which are not right. I think they will face basically. I mean, like next time when they are going to raise the money, it will not be very straightforward for आई them. एग्री। Yeah, आई that I एग्री। can. Yeah. पैसा तो उठाने में दिक्कत होगी यार, एक बार ये लग जाता है ना कुछ भी लीगल ट्रबल में जाओगे तो पैसा उठाने में Mm-hmm. रिस्पेक्टिव आपको दिक्कत होगी। ओके, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू वी हियर। ये इंटरेस्टिंग है। इट्स अ हियरिंग सॉल्यूशन। They came for 2.5 CR for 1% इक्विटी। ये कितनी 250 करोड़ की कंपनी बता रहे हैं अपने आप को फिर। एंड दे एक्चुअली गॉट अ डील फ्रॉम पीयूष। 2.5 CR for 1% equity plus 1.5% advisory equity and a conditional offer। अच्छा, वी हियर क्या करती है भाई? वी हियर देखे जरा। वी हियर अनुपम मित्तल तिगड़मबाज। ओके, क्रैक्स द डील टू सॉल्व द हियरिंग प्रॉब्लम ऑफ मिलियंस। इनकी वेबसाइट भी एक बार देख लेते हैं एंड विल प्रॉब्ली लुक एट द पब्लिसिटी दिस। अच्छा, बोन कंडक्शन हेडफोन्स, इंटरेस्टिंग। अच्छा, तो ये बोन कंडक्शन हेडफोन्स को अपना यूएसपी बना रहा है। तो आई एम सरप्राइज्ड अमन ने इसमें पैसे नहीं डाले। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा था क्या उसके लिए? Yeah, इंटरेस्टिंग। most probably. He he हाँ, he will make it himself, right? नहीं नहीं, If बट this मेरे is ख्याल the से मेडिकल फोकस्ड है इनका। सो अगर ये यूज केस वाली चीज होती है ना यार, इट Yeah, so डजंट this हार्म is, यू। I think,
Yeah, so No, go on, go as on. far as my understanding is there, they had two products, and one of them was specifically for people who cannot hear at all. Hmm. Yeah, more in Hmm. the medical space, not for like Hmm. recreational. I guess maybe one of Hmm. the reasons that the market size is not big enough for him to make money, right? Also, this actually comes back as more like a CSR activity, right? So maybe he that I mean he might be slightly more business minded, I guess. So they are saying the only sir अच्छा तो ये बोल रहे हैं कि हियरिंग लॉस वालों के लिए ही इनका मेन पिच है. This is what they were pitching for. आ, ठीक है, इंटरेस्टिंग. एक मिनट में ये पहले तो वेब प्राइवेसी. Right. Yeah, the reason I हाँ, think Piyush actually put money, right? Because Piyush actually says the same thing that he wants to solve the real problems of like what we face in India. I guess that's why he put his इंटरेस्टिंग. money here. नहीं, बोन कंडक्शन टेक्नोलॉजी हैज बीन अराउंड फॉर क्वाइट अ बिट. इंडिया में मेरे ख्याल से किसी ने इसको उतना ये नहीं किया, बट दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन. वेरी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन. अच्छा है, मेरे ख्याल से पीयूष टाइम भी लगाएगा. लेंस कार्ड भी है ना, तो आई थिंक Right, right. अभी Mm, जैसे मतलब इनके इनके जो चश्मे हैं, चश्मे का जो डंडा होता है उसी के थ्रू तो बोन कंडक्शन का पूरा गेम चलता है. तो इट्स अ वेरी ऑर्गेनिक mm, इंटीग्रेशन with probably Lenskart's line of products. Very interesting. mm. Good. चलो, As moving good on as to the. acquisition. हाँ, It could क्या be बोल as रहे हो? good as acquisition, right? It could be as या good या as या acquisition as या well. या Yeah. या 250 करोड़ में तो एटलीस्ट इसने ये तो कर ही दिया. 250 करोड़ कितना, 40 मिलियन की वैल्यूएशन तो ऐसे ही हो गई इनकी. तो Right, right, right. इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग. चलो, मूविंग ऑन टू टिगल. टिगल इज चॉकलेट मिक्सेस. 50 लाख मांग रहे थे 5% इक्विटी के लिए. इनको मिली है 50 लाख 20% इक्विटी के लिए. अच्छा, प्लस 2% रॉयल्टी अंटिल 1 करोड़ इज रिकूप. ये क्या है भाई? मतलब ये बंदा अपने सब कुछ ही बेच करके चला गया, मुझे लग रहा है यहाँ पे. टिगल हॉट चॉकलेट. अच्छा, दीज आर मिक्सेस. ये तो D2C ब्रांड है यार. D2C ब्रांड का तो क्या लगता है अभी, बाय द वे संध्या, काश तुम लोग को. आई थिंक D2C तो सैचुरेट कर गया है यार. मतलब जितना जितना भी आप ये कर लो. I think the number of D2C brands in every specific category has grown in leaps and bounds now यार. मतलब अभी तो ऐसे ब्रांड्स को सरवाइव करने में, मतलब 2 साल पहले जो आपको अपॉर्चुनिटी थी कि मार्केट में शायद आप रनिंग द राइट एड्स या फिर अमेजोन पे आप फीचर हो गया एंड ऑल ऑफ दैट, अभी तो हर जगह आपको नया ब्रांड दिख रहा है. तो पूरा का पूरा गेम ही अभी Yeah, डिस्ट्रीब्यूशन का हो think गया है. massive competition, पूरा का crazy पूरा गेम ही competition. पूरा का पूरा गेम ही डिस्ट्रीब्यूशन का है अभी. तो यू विल हैव टू बी Yeah, देयर I इन think अ offline. ब्लिंकिट. बोलो बोलो. Uh, like distribution, like distribution का गेम है ऑनलाइन बट ऑफलाइन का भी हो गया गेम आजकल. आई थिंक ऑफलाइन अगर आपने इसमें बेसिकली प्रीमियम सेगमेंट का क्या फायदा रहता है. प्रीमियम सेगमेंट में क्या है कि इवन इफ यू आर इन वन वन मेट्रो सिटी, राइट, यू कैन एक्चुअली मेक मनी. आई थिंक आई एम 100% श्योर इनका है ना, इनका आई थिंक ऑफलाइन स्टोर होगा. एल्स नो वन विल पुट द मनी. इसको टेक से मतलब आई थिंक D2C लाइक यू आर सेइंग, राइट, फ्रॉम ऑनलाइन आई थिंक इट्स वेरी हार्ड टू सेल एंड मेक. किसने डाला है पैसा इसमें? पीयूष और अमित हंड्रेड जैन परसेंट ने डाला ऑफलाइन है होगा. ना. पीयूष और अमित जैन ने डाला हम्म. है. तो देखे जरा एक करके कैसे नेक्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर. ये तो ज्ञान है भाई. ठीक है, इट वाज माय हाउ टू बिल्ड 1 CR 20 गेट टिगल. क्या बोल रहा है भाई ये? देखो, प्रीमियम प्रीमियम हॉट चॉकलेट पाउडर. ठीक है, मैडम ने क्या किया है बताओ आगे लाइफ में. अनुवा कक्कड़ ने चॉकलेट बनाया. हाँ देखो ना, DLF फेज 3 मेट्रो स्टेशन के बाहर ये हॉट चॉकलेट के ये बेचे हैं इसने. एग्रोबेस D2C ये बनाया. ड्रिंक इससे बना है. 3 PM वैरायटी है. हाउ बॉर्न इन आगरा, कंप्लीटिंग एजुकेशन. अच्छा अच्छा, रुक जा रुक जा. अच्छा नहीं, इसकी पेडिग्री तो ऐसे कुछ है नहीं. Instead of figuring out how to budget, अच्छा, lack of quality, she began researching, began designing, printing, and couple of pamphlets. Okay, Lille Phase 3 metro station, partnered with a kiosk inside a metro station. ठीक है. एवरी इवनिंग पोस्ट ऑफिस कियोस्क. तो ये कियोस्क वेंडर्स अब
On weekend, she would stand on the kiosk corner, sell the hot chocolate. अच्छा, Tiggle the finally partnered with the 140-acre family-owned organic farm in Tamil Nadu. ठीक है, तो इन्होंने मेरे ख्याल से एक तो सप्लाई चेन में ये ब्रेक किया है कि दे हैव बेसिकली डन अ बैकवर्ड इंटीग्रेशन एंड दे हैव बेसिकली टाइड अप विद एन ऑर्गेनिक फार्म विच डज कोको। तो इनका एक तो वहां पे आया मेरे ख्याल से मोट कि अब हमारी हमारी क्वालिटी की चीज हमारे पास ही रहेगी। ठीक है, फॉर्म द फार्म वी चोज डिड द बेस्ट वर्क। ठीक है, रिसेंटली द ब्रांड आल्सो लॉन्चेस फर्स्ट ऑर्गेनिक सेट टू फीचर योर बिगेस्ट ड्रीम्स। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है यार इसमें। आई थिंक ओके डिड सीजन 3 इसमें एंटरप्रेन्योरशिप कहाँ से आएगा यार। चलो मेरे ख्याल से D2C ब्रांड ही है। लेट्स मूव ऑन से अभी इसमें वेस्ट करेंगे टाइम। इन केस यू पीपल हैव एनीथिंग टू से तो फिर आई वेट। कुछ है संध्या, एनीथिंग यू वांट टू ऐड? मृदुल, हाय मृदुल, योर I बीइंग द think Nothing. साइलेंट nothing. स्पेक्टेटर। हाय हाय हाय। Hi guys. Hi हम्म, Sohail. Hi Sandhya. Hi Bharat. Hi Akash. I हाँ think बोलो बोलो। in my personal opinion, D2C brand hai, and it's all. I mean, it's great that they've got a little bit of funding, but at the end हम्म, of the day, there's a lot of competition already, या and या it's just a matter of time before that funding dries up. It's really a question of how they scale up. If she plans to primarily use that kind of funding to set up her own outlets, I think it's going to become very asset heavy. But if she continues to partner with kiosks like she does, like she has already been doing, and keeps it asset light, I think she may have a little bit of a runway. But then again, I don't see too much of a future for this business. ज्यादा है नहीं यार, ये वही वाली चीज है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन गेम है यार पूरा का पूरा, और कुछ नहीं है इसमें। देर इज नो नॉवेल्टी इन टर्म्स ऑफ, बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी हाईली रेप्लिकेबल प्रोडक्ट यार। ठीक है, तो हॉट चॉकलेट के इतने सारे तुम अनलेस एंड अनटिल यू हैव अ सर्टेन फ्लेवर एंड दैट फ्लेवर आल्सो, मतलब वो फिर आई वुड रेकमेंड, मतलब वही लॉयलिस्ट वाली बात हो जाती है। बट घूम फिर के विजिबिलिटी की बात है, डिस्ट्रीब्यूशन आपका सही रहेगा, हर जगह दिखोगे तो लोग लेंगे। आई रिमेम्बर there used to be this yogurt brand called Agapi. How many of you have heard of Agapi? संध्या, आपने सुना है Yeah. Agapi का? Yes. I've नहीं, heard so of it. Agapi, हाँ, Agapi is one of our portfolio companies TBC के इसमें। तो लास्ट ईयर जब वो लॉन्च हुए थे ना, तो एंड उनका भी वही था कि यार देख, प्रोडक्ट तो हमने बहुत अच्छा बना लिया है, डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम आ रही है। और मैंने नहीं सुना था क्योंकि वो ब्लिंकिट में थे नहीं, वो बेच रहे थे अपना अमेजोन पे। मैंने बोला भाई, तो अमेजोन पे बेच रहा है, जनता जनता दही खरीदती कहाँ से है? तो आप उस वहां पे जाओ ना। तो दे स्टार्टेड गेटिंग इनटू, उसके बाद उन्होंने बिग बास्केट पे आए। तो क्यू कॉमर्स इज वेयर ऑल ऑफ दीज थिंग्स एनी विच इज मूव द मोस्ट, अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ लॉयल ऑडियंस बेस। इनको भी अभी तो पूरा का पूरा गेम ही क्यू कॉमर्स एंड ऑफलाइन का हो गया है। आई थिंक आकाश इज ऑल्सो राइट कि ऑफलाइन 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 प्रेजेंस and क्यू कॉमर्स प्रेजेंस बिकम्स अ क्लिंचर फॉर दीज पीपल। और वहां पे भी फिर आपको जिस तरीके से रियल एस्टेट आपको खरीदनी पड़ती है अमेजोन में, वैसे अभी धीरे धीरे ब्लिंकिट एंड जेप्टो एंड ऑल ऑफ दीज प्लीज पीपल हैव आल्सो स्टार्टेड सेलिंग द रियल एस्टेट्स की प्रीमियम पोजिशनिंग हम प्रमोट करेंगे अपनी तरफ से, आपका पहले दिखेगा, उसका एक्स्ट्रा पैसा। आई डोंट नो अभी कमीशंस का क्या सीन है। आई थिंक आकाश, इसके ऊपर आप याद दिला देना। आई थिंक वी हैव somebody फ्रॉम ब्लिंकिट आल्सो विद इन आवर कम्युनिटी। मेरे को समझना है यार कि ये कमीशंस का मॉडल, उनका उनका जो ओवरऑल मॉडल है, वो फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव देयर इज अ लॉट ऑफ स्टफ in terms of innovations that they're doing, in terms of the categories that they're exploiting, but from a business perspective जो चीजें वो बेच रहे हैं in terms of solutions, I wanna dig a little bit deeper कि वो D2C brands और इन सारे सारे छोटे मोटे जितने भी ये हैं, उनके लिए तो अच्छी जगह है बेचने के लिए। But how exactly are they innovating on their business model? Okay, moving on to Wildcard, WYLD, customer as an influencer. This is an interesting one. 50 लाख की मांग रहे थे for 0.5% equity, यानी 100 करोड़ की कंपनी बता रहे थे। दे गॉट फंडेड बाय अनुपम मित्तल। वेरी इंटरेस्टिंग, 75 लाख फॉर 1.5% इक्विटी। वाइल्ड कार्ड, सो दे बेसिकली से कि आपका कस्टमर ही आपका इन्फ्लुएंसर बन जाएगा, विच इज बेसिकली वर्ड ऑफ माउथ। सोशल करेंसी कार्ड, हम्म
ये क्या चीज है भाई? एक मिनट, देखते जरा। वाइल्ड कार्ड। Okay. Earn as a social media user. So they are basically saying India's first social currency payment card, fintech and martech mobile app. The app lets anyone with over 1,000 followers on Instagram and a wild score of over 100 to apply for wild payment card. तो आपको पैसे देंगे आपके कार्ड में। भरत नोट डाउन कर ले भाई ये। ठीक है। ये हमें भी करना है। While the world's first social currency payment card is launched in Mumbai, powered by Visa, the platform will allow everyday social media users to leverage the Instagram following to earn massive cashbacks on everyday spends. The platform is invite only and open to the first 5,000 users on their wait list for 10,000. Very interesting. What do you think about this model? Akash, Pradul, Sandhya? बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है This यार ये। is yes, I think this is the only like only startup I basically saw the video for. Actually, one of my so I follow one of the person like he also runs a seed stage I think, and two or three of his basically portfolio companies are close to 100 million, and one of them is $1 billion. So he's a very like smart VC, and he has हम्म। also put money into this. So हैं? he was the one that who basically put the first money. ना So बेटर yeah, कैपिटल this one. वैपिटल सबने पैसा डाला हुआ है यार इसमें। Yes. So अच्छा। yeah, the person. Yeah. So that's चार why I इतने में डाले this is हैं the पैसे only इसमें। company. In fact, हम्म। their idea is extremely good. I think. Like, इट्स अ गुड आइडिया। will do और one. सारे इन्फ्लुएंसर्स भी है ना इनके इसमें। सुबीयूनिक ने भी Hmm. डाल दिया, मालिनी मिस मालिनी ने भी डाल दिया। M2P फिनटेक, ठीक है। अच्छा, फिनटेक वालों ने से भी पैसा लिया। अच्छा, गणेश मीना गणेश ने भी डाला है। इंटरेस्टिंग, मतलब है, मटेरियल है इसमें। अमन गुप्ता ने भी डाल दिया। कैपिटल ए ने भी डाला है, अर्थ वेंचर ने भी डाला है, प्लान बी ने भी डाला है। इंटरेस्टिंग। ये तो भाई देन दिस इज अ सक्सेस स्टोरी एनीवेज। आई थिंक प्रमोशंस के लिए आए होंगे फिर। ये प्रमोशन के लिए ही आया होगा। नैनो इन्फ्लुएंसर्स के करेंगे। दिस इज अ वेरी गुड आइडिया, दिस इज अ गुड आइडिया। Company has already partnered with over 200 brands across several verticals. Social, Smokehouse Delhi, Boat, Lenskart, ठीक है। Closed loop alpha testing phase. 700 transactions worth 10 lakh, generating 500 pieces of content with 85% retention rate. तो ये करती क्या, ये क्या बोलती है? आप एड डालो, जो आपका आएगा उसके बेसिस पे See आपको what they do कैशबैक is मिलेंगे। what they do is that let's suppose you are a normal person. I mean, normal person हम्म। in the sense they have this thing that you should at least have some number of people on Instagram. So हम्म। yeah, so here it is 1,000, like at least 1,000 हाँ। for follow on Instagram. Now what you do is हम्म। that let's suppose you actually went to a brand. As soon as you basically get something on the brand, there you take the pic of the brand and then you post it. As soon as you हम्म। will post it, what will happen is that there will be someone like from the back end, they will basically say that yes, you have basically bought this and this XYZ, and then what happens is that you get money out of it. So you will get हाँ, some 30% or forty this is percent the reward clincher. on the This is the clincher. yeah, So it is not about just making purchases, but posting about that purchase on Instagram, and then you correct, earn correct, cashbacks. तो हार्डकोर yes, वर्ड sir. ऑफ माउथ है भाई ये, कि भाई मैंने ये Right, खरीदा right, है, ये डालो आप सोशल मीडिया पे और आपको मैं पैसे दूंगा। ठीक right, है। right, right, तो exactly. ये This is ये ये that's the जो model. ये ये वो होता था ना कि शेयर ऑन, एक याद है, एक वेबसाइट हुआ करती थी जो ये उसका नहीं, विटी फीड वाले चलाते थे, वायरल नाइन नाम को उनका प्लेटफॉर्म था ना, कि लिंक डाल दे रहे हैं इसको, आप सोशल मीडिया पे डालो और उस लिंक जितनी बार आप डालोगे आपको 5 रुपए मिलेंगे। तो ये तो वही है। इट्स बेसिकली, दे आर बेसिकली डूइंग पेड प्रमोशन सब वाला हिसाब है ना, कि वी आर पेइंग पीपल टू पोस्ट। Yeah, right, right. But Mm-hmm. this is a good idea. This is a good idea. This is a good implementation of an idea, the way I look at it. इंटरेस्टिंग। Mm-hmm. चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मेरे ख्याल से लेट्स सी हाउ मेनी स्टार्टअप्स, अच्छा जितने स्टार्टअप्स ने पहले पैसा डाला है उनको कर लेते हैं। देन देयर आर लॉट ऑफ देम विच जिसमें पैसा नहीं गया है उसको बाद में करेंगे, बिकॉज वी डोंट हैव टाइम। ठीक है। तो गोइंची फेनी, विच इज एन फेनी, अच्छा, दिस इज अ फेनी ब्रांड।
1 करोड़ 5% इक्विटी मांगने आए थे, 2 पर्सन को करोड़ को 15% इक्विटी देके गए हैं। किसने पैसा डाला है? दीपेंद्र गोयल ने, जोमेटो। मेक सेंस। गोइंची फेनी देखे जरा, पिया है किसी ने गोइंची फेनी? गोवा का ब्रांड लग रहा है मेरे को। गोइंची फेनी It's a Goa brand. गोवा ब्रांड नो। Yeah. हम्म। They want to make Feni a brand, basically, something that people remember when they talk about India and alcohol, because there is no uh, exotic alcohol from India as of now. So this is their vision. वेरी इंटरेस्टिंग। ये प्रीमियम फेनी होगी नहीं? हम भी बहुत फेनी उठाया करते थे यार, कैशियो और कोकोनट दो ही तो आता है। राइट वहां पे। No, this is premium. I think they mentioned their price also. It was on the premium end. प्रीमियम ही होगा यार, नहीं तो फिर बिके ये। Yeah. ब्रांड नहीं बनता यार सस्ती दारू का, अनलेस यू आर ओल्ड मॉन्क, Yeah. देन दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। Yeah, yeah. बट ऐसे नहीं बनेगा आपका ब्रांड सस्ते। देखो ये वही है, देखो ना, आर्टिसनल लिकर। इंटरेस्टिंग। कोंकणी सिट्रस फ्लेवर। चलो ये तो दारू की ब्रांड है, दीपेंद्र गोयल ने पैसे डाल दिए हैं। अब बढ़ते हैं अराटा। अराटा इज अ हेयर केयर ब्रांड। Okay, so it's a 1%. They basically were looking for one crore for 1.25% equity, and they basically got 1 crore for 1.33% equity plus 0.67% advisory equity from Namita Thapar and Vinita Singh, यानी कि healthcare and cosmetics. Arata. Let's see what they do. Arata. देखें भाई, शैम्पू अच्छा है, सिर्फ शार्क टैंक। दे बेसिकली शॉप जेन्युइन, इसका न्यूज पे देखें, कुछ तो आया होगा। शार्क टैंक में क्या ज्ञान दिया इन लोगों ने? तापसी पन्नू रिवील इट वाज अ मिस्टेक टू फोकस ऑन कर्ली हेयर। इंटरेस्टिंग। अराटा एडवांस इंडिया पॉप एक्सो पे भी इन्होंने ये किया है। ओके, चलो लेट्स सी व्हाट दे डू। वेयर इज अराटा? सेट। ओके, शार्क टैंक, शार्क्स फेवरेट प्रोडक्ट। ओके, अब मेरा यहाँ पे वो नहीं चल रहा है कि वेबसाइट ही डाउन हो गई है क्या? They're हाँ। right now into hair care and skin care both, but I think they started with specifically products for curly hair. Now हम्म। they've pivoted into skincare also. मतलब देखो, मेरा तो ये मानना है कि एक एंटरप्रेन्योर अगर एक सर्टेन इंडस्ट्री में, तो पिवट्स तो होंगे। तो ये बोल रहे हैं कि इन्होंने पिवट्स काफी किए हैं। अनुपम मित्तल गोइंग सो फार एज टू प्रेडिक्ट डूम फॉर द एंटरप्रेन्योर्स। इंटरेस्टिंग। 70 करोड़ इन्होंने तापसी पन्नू को ये भी लिया था। दीपेंद्र, अच्छा। Five sharks, different reactions. The brand counted तापसी पन्नू ambassador already been valued at 40। अच्छा, इन्होंने पहले भी पैसे उठा रखे हैं। 10 मिलियन के आसपास का इन्होंने, मतलब 10 मिलियन का की वैल्यूएशन इनकी थी। बोथ Yeah. ऑफ हिम। They've raised 3-4 times. अच्छा, देव रेज 3-4 टाइम्स क्या? Yeah, अच्छा। yeah. This is actually a Get Vantage portfolio also. है, So डेट फंडिंग कर रही largely they're है। doing well. गुड गुड Debt गुड। plus equity, दोनों ही. They're doing hybrid. So वेरी largely they're नाइस। doing well, but I think as shown on Shark Tank means they're still, let's say, trying to position in one specific segment. वो तो ठीक है। But on a macro level, they're doing well. हम्म। 35 मिलियन। अच्छा, इन्होंने 2022 में पैसे उठाए हैं, 2020 में भी उठाए हैं। दे गॉट ईडब्ल्यूडी सर्टिफाइड। 2020 में सबसे पहले उठाया था इन्होंने प्री सीरीज ए राउंड 1 मिलियन का। फिर उन्होंने 35 मिलियन उठाए हैं फ्रॉम अभिषेक देव। ये क्या हिसाब है भाई? ओके, ये तो ठीक है। मतलब आई थिंक इट्स एन एवोल्यूशन यार। ऐसे वाले केसेस में तो आपको आर एंड डी में स्पेंड करना ही पड़ेगा। Yeah. हम्म। हम्म। 35 मिलियन Of course, उठाया है। skincare. Uh, 35 मिलियन मतलब कितना हो जाता है भाई? यहाँ पे कितना उठाने के लिए आए great थे? हो यहाँ जाएगा. पे किस वैल्यूएशन पे गए ये? 1% पर 1.25% वहाँ इक्विटी पे तो काफी सेम कम हो सेम गया। वैल्यूएशन आई थिंक 70 सेम सीआर के कुछ ही वैल्यूएशन. वही 100, हाँ, अराउंड 70 They सीआर के mentioned that आसपास के वैल्यूएशन है। they हम्म। mentioned they had जो उनके पास वैल्यूएशन था from their current proposed investors. सेम हम्म। वैल्यूएशन पे ही उठाया उन्होंने.
so that their जो अभी हम्म proposed rounds है वो भी same valuation पे they can continue. हम्म। ठीक है, मैं पहले क्रंच बेस पे देखता था। आई थिंक आई हैव टू शिफ्ट टू ट्रैक्शन। ट्रैक्शन में देख Whatever लिया, story 5 राउंड your उठाया can is इन्होंने यार। $3.61 मिलियन। लेटेस्ट 500 के उठाया था सीरीज है 2022 में। वही वो लोग गलत डेटा है वो। तो Based on whatever they were asking, ठीक है। based on whatever they are हम्म। asking, they have a valuation of around 80 crores 70-80 करोड़, approximately, हाँ। which is reasonable, I think, considering the Yeah. fact that they've raised funds 3 to 4 times already. Uh, but I दस think the मिलियन business model is quite interesting. Most of the funds might go into research and development itself. नेचुरल वीगन एंड क्रुएल्टी फ्री अराउंड 2 मिलियन के आसपास का इनका रेवेन्यू है एज ऑफ 31 मार्च 2023। गॉट इट। इंटरेस्टिंग। अच्छा, आपकी पोर्टफोलियो कंपनी और कोई पोर्टफोलियो कंपनीज भी जा रही है क्या? पहले से बता दो संध्या। देन विल कवर देम प्रॉपर्ली एंड से गुड थिंग्स अबाउट देम। No, as of now, it's just Arata. अच्छा, चलो वेक्रॉस पे चलते हैं। वेक्रॉस बेसिकली स्पेशियल एआई ड्रोन। इंटरेस्टिंग। 1 करोड़ फॉर 2.5% इक्विटी, काफी सस्ती ड्रोन कंपनी लग रही है। 20 लाख फॉर 1% इक्विटी एंड प्लस 80 लाख डेट एट 10% फॉर 3 years। ये दिया है इसको अमन गुप्ता ने। ये भाई गुप्ता, गुप्ताज आर बनियास क्या? आई एम जस्ट आस्किंग, आई डोंट नो। हाँ हाँ तो बढ़िया है। Yes. ये देखो बनियागिरी Oh, कर रहा है यहाँ पे बैठ करके। They are business minded है बिल्कुल। पूरा पूरा। मैं तो आज के पहले सीजन 1 में ना थोड़ा सा मेलो डाउन डाउन था वो। अभी सीजन 2 सीजन 3 में ना निकल रहा है भाई उसका पूरा। एनीवे, सो वैसे दे आर बनाने बन हाँ, एआई पावर्ड ड्रोन सिस्टम्स कंपनी। 250 के उठाया था ना रीबैलेंस एंजल कम्युनिटी से। पुराना न्यूज है मेरे ख्याल से। अच्छा, फरवरी 5 2024। अच्छा अच्छा, अभी उठाया। फाउंडेड 2021। कंपनीज फ्लैगशिप प्रोडक्ट इज अथीरा, an autonomous drone fueled by whatever OS। तो ये OS इनका शायद IP है, is what I understand। Jetpix TM, Jetpix। We have developed an entire OS to launch drones autonomously and operate them without the need of a pilot। We want to empower industries with GPS independent AI on। अच्छा, तो ये तो इंटरेस्टिंग है। मैं राजेश जी को भी करूंगा। राजेश जी ड्रोन में बहुत पैसा लगा रहे हैं अभी। ठीक है। ड्रोन इकोसिस्टम इन इटसेल्फ हैज बीन इन न्यूज। ड्रोन ऑन स्पेस टेक में अभी मेरे ख्याल से बहुत फंडिंग हुई है 2023-24 में। मेरे को थोड़ा सा आई डोंट नो वेदर यू गाइस कैन प्रोवाइड अ लिटिल बिट ऑफ एन आइडिया अराउंड दिस, बट क्या लगता है तुम लोग को ड्रोन इकोसिस्टम के बारे में? ये तो मतलब I think विल इट एवर कम टू अ स्टेज वेयर मेन स्ट्रीम पे आएगा एप्लीकेशन वाइज, या फिर बस अभी ऐसे absolutely. ही चल रहा है मामला? I, I think that's a good question to ask. I think I work very closely with the drone sector, and the drone utility is very high. मतलब ओके। यूएस एंड वेस्टर्न मार्केट्स में आई थिंक ड्रोन का जो यूज केस है जैसे लॉजिस्टिक्स में और हम्म अदर यूज केसेस इन मेडिकल सप्लाईज इज वेरी हाई हम्म and in a country like India where outside of the big cities you don't have a great medical connectivity and all of that, drones are हम्म already being used to deliver medical supplies as a last mile connectivity option. And if these हम्म e-commerce players start using drones, I think हम्म it's going to be great business for the drone companies. So there is a lot of use case for the drones in India, and the government is also having a specific focus on the drone sector, allowing हम्म private players into the defense sector, giving them government contracts for medical supplies. And there were other companies also which have raised fundings. I have heard of Sky Air Mobility raising funds, and a couple of other drone companies raising a lot of funding. Red Wing Labs raising one. So Yeah. a lot of traction in the drone sector especially. यार देख, पैसा तो उठा रही है। मेरा दिक्कत ये है ना कि मुझे एप्लीकेशंस का समझ में नहीं आता। ये लोग बोल तो रहे ई कॉमर्स करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे,
बट आई हैव नेवर सीन एनी सक्सेसफुल वेस्ट में भी अगर तू देख ले इवन इफ लेट्स से वी से दैट फ्रॉम अ टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव दिस इज समथिंग व्हिच कैन बी इमिटेटेड फ्रॉम द वेस्ट बिकॉज इसमें कल्चरल स्टैंड पॉइंट का कोई ये नहीं है दिस इज प्योरली एन इंफ्रास्ट्रक्चरल प्ले एट प्ले वेस्ट में भी अभी तक ड्रोन डिलीवरीज हैव नॉट बीन दैट बिग ऑफ अ सक्सेस आर वी सेइंग दैट विल बी एबल टू लीपफ्रॉग दैट और इज देयर अ सर्टेन टाइमलाइन व्हिच इज इन माइंड कि यार 2030 तक हम हमारा प्लान है करने का इसीलिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर और वी आर बिल्डिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन द मीन टाइम I don't think so. It is, I think in India, right, the problem is that the last mile is very cheap with a person, right? I mean, हम्म most of these big companies, they pay just basically 10 bucks or close to that, right? Some, मतलब 20 रुपए, you'll just get 20 rupees, हम्म right, for one parcel. yeah There is no point to replace it with a drone. I mean, the use case is not like that. In US, the thing is that the cost for one human is very high, right? So that's why they want to automate it. But India, that is not the point. What I see is that the biggest problem in India for drone is that it is mostly driven. It will be driven by B2G or B2B. B2 B2, हाँ B2G, the problem with B2G is that as long as you are using Gem portal, everything is safe. But the problem with B2G is that, I mean, I'm not trying to say anything bad, but I mean, you can't expect a like long-term partnership with B2G because there are so many things which happen behind your back, right? So you can't हम्म say consistent कंट्रोल with नहीं है that. I आपके think हाथ में B2. उतना Right, there is no control. Right? I think B2B is the only space where there is control. But again, the problem is that the labor is so cheap in India, right? If you want to use drone in India in B2B, you need to have a use case which can't be done right now, or if it is done, the cost is so high that the robot like price would be cheap, right? So that's the only way you can make money. So that is the issue. Like so far, I'm not sure of any use case, but yeah, of course, there might be some, but I have not heard of any use case which would make sense so far. क्या लगता है मृदुल व्हाट इज योर टेक ऑन दिस इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट Uh, it is no doubt, and I think Akash rightly said that most use cases would be focused towards B2G and let us say B2B. The B2G segment is the prime focus for a lot of these drone manufacturers at the moment. But हम्म where I would probably differ is, use cases are there, हम्म and it's just that it has to be adopted a little more. I think implementation here in India would be a little slower off the blocks compared to the Western nations, but use cases kafi hai, you know. And हम्म India itself is a very unique market itself, and you can't juxtapose the Western market and put it over here and say that US में नहीं हुआ या यूरोप में नहीं हुआ तो इंडिया में भी नहीं हुआ. There's a हम्म lot of uniqueness in the Indian technological market that way. नहीं नहीं मतलब मेरा तो बस वही टेक है यार एप्लीकेशन पर्सपेक्टिव से मुझे अभी भी इसके यूज केसेस क्लियर नहीं है तो मेरा माय ओनली सबमिशन इज कि भाई यूज कहाँ होगा ये बना तो रहे हैं हम पर यूज कहाँ होगा वो मुझे समझ में नहीं आ रहा पर ठीक है लेट्स सी क्योंकि अभी भी जो बन रहा है ना वो एज आकाश पॉइंटेड आउट वो B2G ही है वो गवर्नमेंट के एप्लीकेशंस में ही यूज होगा डिफेंस में ही यूज होगा B2B में भी कहीं पे आप आप नहीं देखोगे ज्यादातर ड्रोन एप्लीकेशंस हैपनिंग अगर कोई कुछ मैं मिस आउट कर रहा हूँ तो आई एम हैप्पी टू वी कैन प्रोबब्ली हैव अ लॉन्गर डिस्कशन ऑन दिस मृदुल अगर आपके कनेक्ट में कोई डोमेन एक्सपर्ट्स है ना ड्रोन वाले इनके इसके अराउंड एक बेसिक एक राउंड टेबल हम कर सकते हैं जस्ट अराउंड ड्रोन्स लेट्स मेक दैट हैपन दो Absolutely. तीन लोग लेकर के आते हैं और इसके अराउंड हम डिस्कशन करते हैं ओके मूविंग ऑन टू गुड गम हेल्दी च्यूइंग गम ब्रांड ठीक है तो हेल्दी च्यूइंग गम ब्रांड 50 लाख 5% इक्विटी सबने डाला है पैसा अमन गुप्ता विनीता अनुपम मित्तल रितेश अग्रवाल सबने ही डाल दिया पैसा भाई तो क्या है भाई गुडगम क्या बेच रहा है देखे जरा ये बबल गम बेच रहे हैं मेरे ख्याल से एंड दे आर इन दी FMCG डोमेन इज व्हाट आई अंडरस्टैंड प्लास्टिक इन योर गम ब्रदर्स अर्न लैक्स मेकिंग प्लास्टिक प्री च्यूइंग गम ये बहुत इंटरेस्टिंग है okay good gum is a country's plastic free 100% natural and biodegradable chewing gum
Aman Gupta exposes lies by environment-friendly chewing gum brand on the show. अच्छा. Latest promo stanza. Aman set to unveil false. झूठ. ये अलग ही बेच रहे हैं यार ये तो. Okay, so what they are saying is it's a chewing gum. But why plastic? Acha, they are saying that regular chewing gums are laden with, they are essentially plastic. The same materials are found in tires, glue, and other gaseous and synthetic substances. When you toss that gum away, it's destined for eternity in the environment. ऐसा होता है क्या? ये मुझे नहीं पता था. या फिर ये भी, is it true? Are we chewing plastics? Are we giving plastics to children? ये क्या हिसाब है भाई? ये बहुत ही डेंजरस स्टेटमेंट है यार. देखना पड़ेगा यार, ये तो हम्म, सच्ची डरा दिया इसने. right, right. सही है। Well, स्टैंड्स आउट च्युइंगम मार्केट एंशिएंट मायन, ये भी अलग 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 ही दुनिया में चला गया भाई आदमी. बेचा भाई. कहानी देख रहे हो इसकी? कहानी देखो. इसका इसका पहला प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही इतना जबरदस्त मारा है कि इसके बाद तुम भी सोचोगे कि यार मैं अपने बच्चे को च्युइंगम दूं या नहीं. ठीक है. बिकॉज kids kids swallow chewing gums as well. And then they are saying कि crafted from a age old Mayan tradition. गुड गम इंट्रोड्यूसेस अ सस्टेनेबल अल्टरनेटिव. देखो मेरा ये मानना है कि जो भी बंदा एफएमसीजी में है, दे नो दैट एट द एंड ऑफ द डे सोप इज अ सोप. ठीक है. मतलब साबुन साबुन है. yeah, उसके अराउंड की you just need कहानी to जो है sell. पूरी मार्केटिंग है. सॉरी यू आर सेइंग समथिंग. Yeah, you just need to sell it. For ये soap also, भाई you have to sell it with the ये story. भाई कुछ भी बेच रहे हैं. अच्छा बेचा है बेसिकली. गुड कहानी. गुड स्टोरी. एंड हाउ मच आर दे मेकिंग? एक कौन सी मतलब गुडगम का एक बार ट्रैक्शन देखेगा. इन्होंने भी पैसा उठाया हुआ है क्या? पहली बार पैसा उठा रहे हैं? ये कितनी पुरानी कंपनी है? हाउ ओल्ड इज दिस कंपनी? 2023 नवंबर, यानी कि नई कंपनी है. पिछले एक साल के अंदर अंदर बनी है ये. प्रेशियस नेचुरल रिसोर्सेज. ये तो वो है. चलो ठीक है. एक पैक ये हम लोग ट्राई करेंगे. निकलवाते हैं हम लोग. Okay. Additionally, Good Gum advocates for sustainable practices beyond products by offering Good Gum canvas tote bag, encourages individuals to save planet, plastic bags, blah blah blah. ठीक है. चलो तो बेसिकली इनकी पोजिशनिंग है सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरनमेंट फ्रेंडली. प्लास्टिक से नो टू प्लास्टिक, हैव आवर च्युइंग गम. दैट इज व्हाट इट इज, राइट? बैंगलोर का स्टार्टअप है. यही कर मतलब आई आई वाजंट सरप्राइज्ड. आई एम नॉट सरप्राइज्ड. बैंगलोर स्टार्टअप ही ऐसे ये करेंगे. दिस इज गुड. सो दे हैव बीन इंक्यूबेटेड बाय एनएसआरसीएल. आईएमबी. आईएमबी में इंक्यूबेटेड है ये कंपनी. अच्छा. 12,000 कस्टमर्स हैं इनके पास ऑलरेडी. वो तो ठीक है. इनकी डिस्ट्रीब्यूशन देखनी पड़ेगी थोड़ी सी, कैसे करके कर रहा है. ये इनका यूजुअल डिस्ट्रीब्यूशन ही होगा यार. मतलब और कोई मुझे लगता नहीं है. I think premiumization of gum and distribution. I think हाँ. these are the two things. ये- Hmm. चलो I मूविंग think, but ऑन टू द. आजकल हाँ बोलो बोलो. lately clean tech, uh, like there are a lot of startups in clean tech lately. I mean, some story of this. I mean, some story of sustainability and stuff. That's happening a हम्म. lot lately. हम्म. ओके. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. इसको जल्दी जल्दी निपटा लेते हैं बाकी सारे. ईवा स्कैल्प कूलिंग सिस्टम. पोस्ट कीमो स्कैल्प कूलिंग ब्रांड. ओके. ये बहुत ही ज्यादा नीश है. 30 lakhs for 1.2% इक्विटी. ये 300 करोड़, 250 करोड़ के आसपास का बोल रहा है. तो 40 million के आसपास का वैल्यूएशन मांग रहा है ये. 30 to 40 million. पोस्ट कीमो स्कैल्प कूलिंग ब्रांड. ओके. इसमें निमिता थापड़ ने डाल दिया पैसा, तो मतलब कि हेल्थ केयर स्पेसिफिक है. ठीक है. ईवा. देखे भाई क्या है तुम्हारा ईवा स्कैल्प कूलिंग सिस्टम्स. वेरी इंटरेस्टिंग. इंडिया फर्स्ट स्कैल्प कूलिंग फॉर कैंसर केयर डेब्यूज. अच्छा. तो ये बेसिकली बाल उड़ जाता है ना कैंसर के टाइम पे. मतलब इफ यू हैव कैंसर, यू बेसिकली लूज योर Yeah. हेयर. इट्स प्रॉब्ली दे आर ट्राइंग टू सॉल्व फॉर दैट प्रॉब्लम. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वन. कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड हेयर लॉस को कम कर रहे हैं.
डिजाइन डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्स, अच्छा ये डिवाइस है, दिस इज अ डिवाइस काइंड ऑफ अ थिंग। आई एम रांची का alumni है ये। स्टेम टेक stands at the helm of STEM Tech, heading the charge with a vision to inspire. Okay, US helps cancer patients prevent one of chemotherapy's most challenging side effects, health loss, hair loss. So they are basically going in for that. Interesting. This is a good problem to solve for, और आई थिंक बहुत ही ज्यादा नीश है। अगर इनका प्रोडक्ट काम करता है तो भाई ये मोनोपोलाइज कर देगा पूरा मार्केट, बिकॉज दिस इज अ वेरी मेजर प्रॉब्लम। और ये वो Yeah, कहते हैं yeah, ना, yeah, yeah. द एंड दिस हैज इंटरनेशनल एप्लीकेशंस, बिकॉज मार्क पूरे इंटरनेशनल, आई डोंट नो फॉरेन में भी इसका कोई कंपटीशन है या नहीं, बिकॉज ही हैज कम अप विद अ मशीन, दिस इज अ प्रॉपर मशीन। Mhm, तो mhm. इंटरेस्टिंग। Yeah, this is very interesting actually. ये अच्छा माल है भाई, ये देखे जरा इसका दिखता कैसा है। कोल्ड कैप, इट्स अ कोल्ड कैप और अ कूलिंग डिवाइस। टोपी है, टोपी पहना देते हैं ये। और बैटरी बैटरी पावर्ड होगी, है उसी में। हाँ ये देखो ना, टोपी है ये मशीन है ईवा नेक्स्ट जेन डुओ, एंड द पर्सन बेसिकली वेयर्स इट ऑन हिज हेड। ये कनेक्ट होता है, बाल सर पे जाकर के लग जाता है। ऐसे टोपी रहेगी इनकी, टोपी पहन करके मशीन के साथ आप बैठे। इंटरेस्टिंग, कूल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, एलईटी। एलईटी नहीं करते हैं, एलईटी में किसी ने पैसा नहीं डाला। हनी ट्विग्स। हनी ट्विग्स इज अ हनी ब्रांड। हनी ब्रांड, हनी ब्रांड, इंटरेस्टिंग। 75%, 75 लाख को 3% इक्विटी मांगा था, 75 लाख को 3% इक्विटी मिल गई। रितेश अग्रवाल ने डाला, पीयूष बंसल ने डाला और अनुपम मित्तल ने डाला। देखें भाई हनी ट्विग्स क्या करती है। हनी ट्विग्स का नाम मैंने सुना सुना सा लग रहा है। हाँ ये यूज किया है हमने। आई रिमेम्बर, ये मेरे ख्याल से बच्चों के लिए भी ये लोग करते हैं, मतलब दे बेसिकली प्रेफर दिस हनी टू फॉर किड्स ऑल्सो। नहीं बोलो, मैंने सुना सुना सा लग रहा है ये। पार्टीज, इंटरव्यू, हनी ट्विग्स, बाइट साइज्ड ऑफरिंग्स भी। अच्छा ठीक है, ग्रोइंग प्रेफर्ड ब्रांड। क्या करता है, सिनेमन इन्फ्यूज्ड हनी। ये यूज किया, इट्स अ गुड गुड वन, बट ये भी डी टू सी ब्रांड ही है। दिस इज ऑल्सो डी टू सी ब्रांड ओनली। तो डी टू सी ब्रांड्स को पैसे डाले हैं, लेकिन आई एम सरप्राइज कि किस किसने डाला है इसमें। अनुपम मित्तल, पीयूष एंड रितेश। इंटरेस्टिंग। अच्छा नेक्स्ट में चलते हैं, कोपारो। कोपारो इज कोकोनट बेस्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट, 70 lakhs for 1% इक्विटी। अमन गुप्ता और विनीता ने पैसा डाला है कोपारो में। कोपारो, देखें भाई करती क्या है ये कोपारो। कोपारो इज अ कोकोनट बेस्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट। इंटरेस्टिंग। तो बेसिकली कोकोनट का जो खस होता है वहां से, अच्छा ये ऑलरेडी पैसे उठाए इन्होंने और भी जगहों से, पैसे 4P कैपिटल ने भी पैसे डाले हैं इसमें। डी टू सी होम केयर ब्रांड कोपारो। ब्रांड has secured 70 lakh on Shark Tank. ओके, विद 10 लाख कंज्यूमर्स, डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाएंगे ये, ठीक है। द रिटेलर क्लोज लास्ट ईयर 5 CR, इस साल 50 CR। ठीक है, मेक सेंस। प्रोडक्ट क्या है आपके, सारे के सारे कोकोनट बेस्ड है इनके। माइक्रोफाइबर डस्ट, स्पंजेस, वाइप्स, बैग्स एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। अच्छा, इंटरेस्टिंग। लेकिन ये मार्केट में कमोडिटाइजेशन नहीं है, क्या लगता है इसमें ब्रांड बनता है क्या, या फिर इसमें ब्रांड बनने की अपॉर्चुनिटी है। जैसे लाइजॉल है या फिर डोमेक्स है, दीज आर ब्रांड्स विच आर, जो मतलब आदमी वही ब्रांड जाके उठाता है। आई थिंक उसी को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है ये। क्या लगता है, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस। They can make brands. I think, yeah, I mean, this since this thing it is used by everyone, right? They can make brand. Just the thing is that the pricing. I mean, again, India is a sensitive market, so they have two options, right? They can start with a premium thing, make their brand, and then of course add more SKUs to.
मेरा for the masses, right? मेरा इसमें देखो क्या टेक है, ये टेक्निकली एक ना डी टू Mhm. सी ब्रांड तो ठीक है, बट ये एक एफएमसीजी ब्रांड भी है। ठीक है, सो दे विल बी competing with a lot of these क्या नाम है इसका, रैकेट बैकेंजर के प्रोडक्ट्स एंड इनके प्रोडक्ट्स एंड ऑल। और इसमें ना यू हैव टू डू अ मेजर एटीएल फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस। आपको टीवी एड्स रन करने पड़ेंगे 6-6 10-10 करोड़ के। ठीक है, फॉर क्रिएटिंग Mhm. मेजर अवेयरनेस एंड देन आपको या तो आप एटीएल राउट पे जाओ जहां पे कस्टमर ही बोले मेरे को कि भाई मेरे को कोपारो खरीदना है, या फिर आप जो आपके रिटेलर्स है, जो मान लो ऑनलाइन ब्रांड है तो वहां पे आपने प्रमोट कर दिया, या फिर आपका जो ऑफलाइन ब्रांड है वहां पे आप ट्रेड ट्रेड पे ये कर रहे हो, यहाँ पे आपको किकबैक्स और इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे, वेयर द रिटेलर देमसेल्व्स पुश द प्रोडक्ट सेइंग कि सर ये ले लो, ये नया आया मार्केट में, ट्राई करके देखना। ठीक है, देर इज नो अदर वे ऑफ मेकिंग श्योर। और अगेन आई थिंक, आई एम श्योर कि इन लोगों ने भी कुछ ना कुछ किया ही होगा, तभी तो 5 करोड़ का धंधा किया है इन लोगों ने पहले साल में। तो आई वुड नीड टू सी दीज पीपल, द फाउंडर्स बैकग्राउंड एज वेल, कि इन लोगों ने पहले क्या किया है। बट क्या टेक है तेरा इसमें, आकाश, संध्या, मृदुल, एनीबॉडी, if you wanna pitch in? I think it's an interesting thing if they're if you're making, sustainable things. I think is सस्टेनेबल डी मेरा टू सी पर्सनल ब्रांड टेक तो इस ठीक है यार, हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ सस्टेनेबल D2C ब्रांड है। तो आई मीन पीपल इन इंडिया आर गेटिंग मोर कॉन्शियस। आई मीन काफी लोग वेस्ट को एप करते हैं एंड हाइजीन को काफी हाइजीन की तरफ काफी फोकस बढ़ रहा है लोगों का। तो उस केस में पर्सनल हाइजीन जो ब्रांड स्पेसिफिकली सस्टेनेबिलिटी पे फोकस करे, आई थिंक इनका फ्यूचर काफी अच्छा है। बस इनका जो सप्लाई चेन है वो सब देखना जरूरी है। हाउ डज द डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल वर्क फॉर देम? डू ये दे देखना, इन्होंने डू दे हैव लास्ट ईयर सामा और डीएसडी से भी पैसा उठाया हुआ है। ठीक है, तो इन्होंने, दिस इज देयर थर्ड राउंड, ये प्रमोशंस के लिए आया है यार यहाँ पे। ये देखो लास्ट ईयर 20, दिस इज द 2023 आर्टिकल, June 6th, where they raised a round from Fluid Ventures, M Ventures and Rajesh और GSF एक्सेलरेटर का पार्ट है ये। ठीक है, डीएसजी कंज्यूमर ने भी पैसा डाला है इसमें। ठीक है, राजेश मेनन फ्रॉम एक्स फ्यूचर ग्रुप हाइपर सिटी ने भी पैसा डाला। हाँ, तो दे हैव गॉट गुड बैकर्स ब्रो, देयर इज नो रीजन व्हाई दीस पीपल वुड हैव नॉट पुट इन मनी। ये है ना कहानी फिर, ये क्या यहाँ मतलब पे बस स्टेट पॉपुलैरिटी के लिए आए हैं अपना मार्केटिंग करने। प्रमोशन प्रमोशन के लिए आए हैं सर ये, और कुछ नहीं। ये तो सारे सारे इनके पास ऑलरेडी दे हैव गॉट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीपल फ्रॉम द एफएमसीजी इकोसिस्टम बैकिंग देम। ठीक है, इंटरेस्टिंग। चलो जल्दी जल्दी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, ज्वेल बॉक्स। इसमें सबने पैसा डाला है, लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी ब्रांड। आई एम सरप्राइज कि नमिता थापड़ ने नहीं डाला पैसा। ये तो इंटरेस्टिंग है, ज्वेल बॉक्स देखे जरा क्या करती है भाई। ज्वेल बॉक्स, ज्वेल बॉक्स टू मार्केट, अरे भाई शार्क टैंक, लैब ग्रोन डायमंड कंपनी सील्स 2 CR फ्रॉम 5। अच्छा, विनीता गेट्स इमोशनल रीडिंग लेटर फ्रॉम प्रोफेसर। अच्छा, चोरी चल रहा है यहाँ पे मामला भाई। सोने लिव एंगेजमेंट इन ज्वेल बॉक्स डॉट को डॉट इन। इंटरेस्टिंग। सो ये क्या करते हैं, कलकत्ता बेस्ड ब्रांड है, इन्होंने अभी 2 करोड़ का डील उठाया है। डायमंड्स ब्रिंग्स लाइफ मैजिक ऑफ साइंस टू द आर्ट ऑफ ज्वेलरी। So they are basically saying that they basically create diamonds in the laboratory. They are physically, chemically, and optically indistinguishable from the natural counterparts. 2022 में चालू किया, और अभी पैसे कितना बना कितना रही है ये देखो भाई, असली हीरे हैं भाई, लैब ग्रोन हीरे। I'm इंटरेस्टिंग। sure it's very high margin business. That's why everyone put money. Lab या grown या diamond, you know, right? The reason why the price of diamond is going down because of this only, because of lab grown down हाँ, diamonds. ये नहीं पता था मुझे, क्या है कहानी इसकी। Yeah. So the thing was that earlier the number of basically solitaires what we have on the earth is less, right? या But डी now बियर्स ने since from मोनोपोलाइज करके रखा हुआ है ना इसको।
Right, right. But now what has happened that the lab-grown diamond side, they look very, very similar to the real diamond, and no one can distinguish between them. So that is why what has happened that last 2, 3 years the prices of diamond had remained the same, and that's why gold and everything is basically their price is increasing. हम्म। और ये तो मतलब ज्वेलरी के तो खैर देयर इज अ डिफरेंट स्टोरी ओनली कि वो तो जबरदस्ती का उन लोगों ने आर्टिफिशियल आ, क्या बोलते हैं हाइप इसको करके रखा था, हाइप हाइप करके करके रखा हुआ है देव रखा था सेट की मतलब वो डायमंड। आर्टिफिशियल स्कैरसिटी क्रिएट करके रखी हुई है आर लैब बट ग्रोन विथ डायमंड लैब शेयर्स ग्रोन, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वन आई हैड नो आइडिया अबाउट दिस so they are saying this is the same lab grown diamonds are identical to earth diamond in every way except that they are grown in a lab. This is a very interesting one here. They have the same chemical, physical, and optical properties as mined diamonds and exhibit the same fire, scintillation, and sparkle. ये तो भाई फिर आईपी वाला गेम है ये तो अच्छा इसीलिए सबने पैसा डाला है भाई इसमें एवरीबॉडी हैज पुट इन मनी no, there is no इंटरेस्टिंग IP. There, yeah, there are very few people who can do it. But you can just you can just think that to get a real diamond, right? The cost of like someone has to go to the mine, someone has to mine it, polish it, bring it back, and imagine that all that cost replaced to someone sitting in a lab and just creating the same thing, right? So you can imagine that या the margins. That's why they want to keep the price of the diamond same. But now the price to create the diamond is very low, right? So the margins become very high. So it's a very high margin business basically. I have हम्म Bharat here. या बोले This was something that I've been tracking for some time now, and mostly because मेरे को पहली बार पता चला कि लड़कियों के लिए डायमंड कितना जरूरी होता है. तो मतलब I've always been of the fact कि यार ये थोड़ा inflated है and everything. But अभी जो correction आने की कुछ आपको इसमें लग रहा है, do you see in short to medium term, मतलब would it be all your diamond sort of this thing becomes प्राइसेस गिरेंगे defunct? तो बोल रहा है यार No, no, प्रॉब्लम क्या है it ना will इसका ट्रेड इज that कि will not happen. डायमंड की That will उतनी not. ही अच्छा डायमंड की उतनी ही वैल्यू है जितना आपका रिटेलर जिससे खरीदा है वही वापस लेता है उतने में मतलब अगर मैं तनिष्क से लिया हुआ मनोहर को जाके बेचता हूँ तो इट डजंट गिव मी द सेम वैल्यू एंड प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. No, no, absolutely. I think what you're saying is absolutely right. See the problem. The just basically, if you think about the business, right? Everyone who is trying to sell the diamond, right? They want to make high margins, right? So no हम्म one want to decrease the price, and that will not happen anytime soon, right? Everyone wants to make money, and they know that the industry is so big that it will not happen that only one player will win. There will be हम्म multiple players. As long as everyone is making money, they will make sure that the prices are still high. It will not grow at the rate which basically gold or silver grows. It will not grow at that rate, but they will make sure that it is like high enough for everyone to make their margins. So I think हम्म the gig was ki, the diamond will also appreciate by your next visit because the making charges on diamond are very different. And Mm. our gold में That's all the वही story. 18 carat is all is there which doesn't leave much to sort of think about. So I mean that's the idea. But अगर इस इसके अंदर if मतलब like stocks would it be I've always thought कि would there be some news that could spook the market to not invest into diamonds? I highly doubt that. I mean, you might have heard that. See, stock market, any big market, right? It is driven by very, very big operators, right? And it might seem from the offset that everyone is against, but there is, of course, these guys, right? These guys work as friends, and because all of them wants to make money, right, of us. हम्म And so that is my True. basic that is what I think. I don't think so. No one will basically hurt their own business, right? Why would Hmm. they hurt their own business? The margins are extremely high in this. They would not Yeah. do it any. As when I discussed this with my wife, she said, "Oh, फिर हम और ले लेंगे instead of saying कि let's get out of it." So I think that underscore the entire point. No, I think yeah, हम्म you should not buy a diamond. I mean, I would highly Sandhya, recommend stay away you're from the it. only girl here. What is your take? Uh, हाँ मतलब your perspective ये मैं बता के देख चुका but it doesn't work.
No take on this right now. I have limited knowledge about lab produced diamonds, and I think I'm glad to hear everyone's views here. So nothing to add. ठीक है चलो लास्ट वाले पे मूव ऑन करते हैं. दिस इज द लास्ट वन. वी ऑलरेडी अ लिटिल बिट ओवर टाइम. डार्क रूम. इसी के बारे में भरत आप बात कर रहे थे ना? आई थिंक वी स्पोक अबाउट दिस वन. A friend of mine, his wife's startup. So this is also so very interesting startup actually. So they basically focus or they basically help you now in today's times. People are losing touch with writing. Writing and physically. ये ज्वेल बॉक्स क्यों दिखा रहा है? अच्छा yeah. Yeah. So ये basically बोल रहा है it's a business that inspires interest in writing letters within people through campaigns and products. ठीक है तो what they are saying is sketchbook. So there are a lot of physical writing, letter writing case, postcards, post calendars, and all of these things, which you people can They buy also from got, them. I think they got They recognition got from funded. They got PM. funded. Many, इसको in fact, रितेश अग्रवाल ने पैसा डाला है 36 लाख. अच्छा, they got recognition from PM, you're saying? yeah. कुछ तो ऐसा है. I think that was the thing that propelled. हाँ, तो डार्क रूम का मैं वो न्यूज भी देख रहा था. डार्क रूम लेटर राइटिंग कार्निवल 2019 में हुआ था ये, लेकिन ये बहुत पुराना है. आई एम नॉट श्योर दिस इज दैट ओल्ड ऑफ अ कंपनी. एंड देयर इज नॉट मच व्हिच हैज बीन रिटन अबाउट देम एज वेल. आई एम वेरी सरप्राइज कि किसी ने इसको कवर भी नहीं किया है. ठीक है. It's not a आ, fancy business. मतलब that's why don't हाँ. people get into this. हाँ. I know Saurabh when he was doing something with Darkroom like long back. हम्म. उससे पहले he was in solar and rural startups and all that. So हम्म. it's not a very fancy business. दिक्कत क्या होती है ना? दिक्कत होती है कि इन बिजनेसेस में ना मार्जिन्स नहीं बनते. तो व्हाट दे आर सेइंग इज दे आर अ लेटर राइटिंग सर्विस दैट एम्स टू रिवाइव द आर्ट ऑफ हैंड रिटन कम्युनिकेशन. वेरी नाइस सोशल कॉज थ्रू इवेंट्स, कैंपेन्स एंड वर्कशॉप्स. ठीक है, तो इनके देख एजुकेशन इवेंट्स इनके कौन कौन से होते हैं. एंड इनका टीजी भी जो है ना, इनको फिर मैं वही मानता हूँ यार. देख, द मोमेंट यू गेट इनटू दीस काइंड ऑफ मार्केट्स, you should try for going a little bit more premium in terms of the TG that you're going in for. नहीं यार Otherwise, it does not make business maybe sense. I think maybe उनके लेवल पे it works जो भी है. हम्म. मतलब समझना पड़ेगा बिजनेस मॉडल क्या है. देयर कुड बी कॉर्पोरेट और सीएसआर का पैसा जाता हो. आई डोंट नो. वाह, ये बिल्कुल सही कहा तुमने. तो ये जो लेटर राइटिंग कार्निवल है ना, ये एक्चुअली इन्हीं का है. आई वाज सरप्राइज. ये 2015 की कंपनी है यार. आई डिडंट नो दिस. ये तो 9 साल पुरानी कंपनी है. ठीक है, भले ही शायद इन्होंने प्रमोशन अभी करना चालू किया हो. तो अगर तू देख, मैं वही देख रहा था कि यहाँ पे मैं न्यूज पे भी सर्च मारा ना मैंने डार्क रूम, तो इसमें आया गवर्नमेंट वाला जो आप बोल रहे थे ना. ये देखो, आर्ट शो लेटर राइटिंग कार्निवल दिस वीकेंड. ठीक है, लेटर राइटिंग कार्निवल इज समथिंग विच इज देयर आईपी. ठीक है. आ गया ये डार्क रूम आर्ट शो मेंटल लॉन्च. हाँ, ये इनकी वेबसाइट बंद कर दी क्या मैंने? हम्म. हम्म. ये इनका आईपी है, द लेटर राइटिंग कार्निवल. ये इनका इवेंट है जिसमें मेरे ख्याल से अच्छा खासा मुझे स्पॉन्सरशिप आती होगी from their this thing. So this is the carnival. So I think this is the lady who's built this as well. एक और छोटा कर लेते हैं. Schedule, thus opening launch of ढाई अक्षर letter writing competition, workshops, video competition entry, post box, postal quiz, video competition. अच्छा, नुक्कड़ वुक्कड़ सब कुछ करा रही है. इंटरेस्टिंग. पार्टिसिपेटिंग स्कूल्स के साथ ये करते हैं, ये टाइप करते हैं. 30,000 students for over 50 Delhi NCR schools. Presented by JK Paper and supported by India Post. The event will witness special competitions, writing competitions. Yeah. As a precursor to the event, the organizers Battis, a 2013 initiative by two NID and Chandigarh's
Hananar Kaur and Allahabad's Sharon Saran come with the pre-carnival competitions. अच्छा ठीक है. Shortlisted lined up cultural performances. Why choose? It's a bigger city. These they're letters to celebs, PM and army jawans. ये basically वो वाला गेम है. It's a very nice idea for sure. ये देखो letter writing carnival इनका. It's a This is niche. their. It's a very interesting niche to be in. I don't know from a margin perspective, from a business perspective कितना है. But 36 लाख Yeah. for 6% equity. ये कितना का बनाता है इनका? What's the valuation then? 4% 6 25. crore, 6 crore, 1 800K, million. 1 million. 1 800, million. 800K. ठीक है यार. 1 million के आसपास का ठीक है यार. बट आई थिंक वही मैं बोल रहा हूँ. देखो इसमें रेवेन्यू मल्टीपल्स है नहीं. हम्म सो डार्क रूम कार्निवल स्टार्ट 2016. ये काफी लोगों के साथ करते होंगे. देखो ना. खाना पीना. इट्स अ गुड फेस्टिवल. इट्स अ फेस्टिवल. अक्टूबर नवंबर 2024 में भी आएगा. इंडिया पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, फूजी फिल्म, जेके पेपर. इंटरेस्टिंग. इसके साथ कुछ किया जा सकता है क्या भरत? फॉर टीबीसी कैन वी डू समथिंग विद देम? बिकॉज मेरा भी एक वो है यार कि आई थिंक पर्सनलाइज नोट्स तो समथिंग विच वी आल्सो वांट टू सेंड आउट टू ऑल ऑफ आवर मेंबर्स. तो मेरे दिमाग में बहुत दिन से है ये कि जो भी बंदा साइन अप करता है ठीक टीबीसी के लिए है तो उसको एक पर्सनल लेटर तो जाना चाहिए. हम्म, आई मीन करते हैं यार. डिस्कस हर्षद ने करते हैं. हर्षद हम्म. ने अभी कल इवेंट में दिया था ना. हाँ. अरे बाय द वे द पराठास वर अमेजिंग. आकाश तूने पराठा ट्राई किया? नहीं 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 अरे ट्राई। उसको फ्रिज में रख देना सबसे हिमांशु पहले. खराब हो हिमांशु जाएगा. अरे आकाश यहाँ बैठा हुआ है ना. हिमांशु का पराठा है. लेकिन आकाश भी तो कल लेके गया ना पराठा इवेंट से. सॉरी आई वाजंट ऑन म्यूट आई वाज जस्ट टेलिंग माय वाइफ. अच्छा अच्छा. भाई वो पराठा खराब हो जाएगा. फ्रिज में रख देना. और बहुत अमेजिंग पराठे हैं वो. ठीक है. बट हाँ. तो क्या बोल रहा था. हैंड हाँ. आई थिंक दिस इज समथिंग विच यू कैन पास ऑन टू आवर स्टार्टअप्स आल्सो. लेट्स टॉक ना. तू तो जानता है ना इनको. लेट्स गेट देम. लेट्स होल्ड ऑफ देम एंड सी व्हाट वी कैन डू. एज लॉन्ग एज हमारा खुद का मैन पावर ना लग रहा हो. लेट्स फिगर आउट व्हाट वी कैन डू विद दीस पीपल. वेरी इंटरेस्टिंग. इन्फोसिस चिट्ठिया. दिस इज देयर टीजी. हाँ इस लोगों की चिट्ठिया ये करते हैं. इन प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने इंदिरा गांधी को क्या चिट्ठी लिखी थी. नारायण मूर्ति के बच्चे. वेरी इंटरेस्टिंग. वेरी नाइस. वेरी नाइस. चलो with that I think we can draw today's session for a close. It was a little bit longer session, but I think we had a great discussion. Sandhya, thanks a lot for joining us यार. तेरी तबीयत भी थोड़ी सी डाउन है, but you still decided to join us. Really appreciate. तुझे मजा आया? Did you enjoy today's session? I think really nice, and I think this Shark Tank bit is also good. You have been doing this for the last couple of episodes, but given this is this is the first time I joined when you talked about and explained all of this. So I think really good, and especially it's good because this is like live news. So Yeah, good to understand about each and every business in very crisp manner. yeah. नहीं यार, आज सौरभ और कुलमणि नहीं है तो उनकी तरफ से एक्सपर्ट ओपिनियंस भी आते हैं. ठीक है. तो हम I लोगों think ने अभी क्या है कि Raj is also here. Raj हाय is also here. राज. He joined in a bit late, राज तो काफी but लेट आया यार. आई वाज वेटिंग फॉर यू. Hey, sorry. Hello, everyone. Hi, Sohail. यार I was in middle of client calls. Usually कोई लोग बात फाइनेंस नहीं. की बात करने के लिए आफ्टर वर्क ही आते हैं. So कोई बात नहीं. कोई बात नहीं तो यहाँ पे यार. आपके भी इनपुट्स बनते हैं यार शार्क टैंक में. तो हाँ. एक नेक्स्ट टाइम अराउंड वैल्यूएशन आप आ वाला जाओ. गिग तो आपका ही होना चाहिए. हाँ. right. फाइनेंस रिलेटेड तो एनी व्हिच वेज आई थिंक वी नीडेड अ डोमेन एक्सपर्ट. तो आप देखो. यू जॉइंड इन अ लिटिल बिट लेट, बट व्हाट हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? Yeah, I just joined in 5-10 minutes before, and हम्म. मतलब I think probably next time I'll block it on my calendar. तो मैं अच्छे भेज से दूंगा पूरा वो सेशन कैलेंडर अटेंड करेंगे. रिक्वेस्ट. हाँ. अब आराम से करना. मृदुल, यू जॉइंड इन फॉर द फर्स्ट टाइम यार. कैसा लगा? Yeah, it was my first time.
So was just trying to figure out how the things were going, and Mm, quite an interesting segment where the audience gets to know about startups funded on Shark Tank. You're exploring a mm, lot of different domains, a lot of different business verticals, and mm, anyone out there who wants to get that learning curve also can directly join in. And the live format, the interactive format, makes it very nice. mm. With people with different expertise and backgrounds. So yeah, great, and hoping to join in more regularly every week. नहीं नहीं absolutely यार absolutely. um एक minute just hold on. By the way, Gudgam is of a friend, and last week जो अर्पित आई थी, she's a colleague जो दिल फूड्स की थी. हाँ Mhm. यार एक सेशन very इसमें nice. अपने इनसाइट्स आप जरूर दो. Mm. Let's have that as well. इसमें what does everyone think? Should we add a section around ki, if there is a particular way to dissect these businesses? Yeah, abhi the freewheeling way is okay. Mm. नहीं नहीं अभी तो मेरे ख्याल से देख शार्क टैंक वाले में तो हमारे तो वैसे भी टॉप न्यूज ही कवर करते हैं हम. आई थिंक शार्क टैंक के लिए दिस इज जब तक शार्क टैंक चलेगा तब तक हमारे शार्क टैंक स्पेशल्स भी चलेंगे. इसमें हम लोगों ने लास्ट टाइम सारे स्टार्टअप्स कवर किए थे. इस बार हमने बस फंडेड स्टार्टअप्स को कवर किया इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम एंड स्टिल वी आर हाफ एन आवर बियॉन्ड. तो अभी इसमें और स्लाइस एंड डाइस करने का अपॉर्चुनिटी मुझे लगता नहीं है. या फिर हम लोग ये कर सकते हैं कि वी कैन प्रॉब्ली रन अ स्मॉल पोल बिफोर कि इनमें से कौन से स्टार्टअप को आप कवर करते हुए देखना नहीं नहीं चाहोगे. तभी I wanted to know because you don't get people from diverse backgrounds who can give you the opinion. अभी यहाँ पे सब लोग अपना बता सकते हैं कि I know the industry, I know the finances, I know हम्म. whatever different perspective. बाकी न्यूज़ तो people can read also, but हाँ. हम्म. चलो मूविंग ऑन टू द लास्ट सेगमेंट ऑफ द डे एंड देन विल क्लोज ऑफ. सो द बुक ऑफ द वीक. इस हफ्ते की किताब है देयर इज अ बुक called What You Hear Won't Get You There, Malcolm Marshall Goldsmith की. दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट बुक्स बिकॉज मैंने जब पहली बार इसको पढ़ी थी मुझे कुछ समझ में नहीं आया था. ठीक है. तो एंड दैट्स प्राइमली बिकॉज प्रॉब्ली आई वाज नॉट द राइट टीजी फॉर इट. और मुझे बाद में समझ में आया कि क्यों. बिकॉज इफ यू लुक एट द टैगलाइन ऑफ दिस बुक और मैं अभी जब वो किताब पढ़ता हूँ now this book makes so much more sense. Basically this is the book for people who are in the phase 2 of their journey. When I say phase 2, basically how successful people become even more successful. So अगर आप already एक certain level पे पहुंच गए हो, if you already at a management level, आप CXO level पे हो, आप director level पे हो, तब जाकर के ये किताब सेंस बनाती है. And this is not an ego kick. This is not just something which I'm saying. When you read the book, जो एडवाइस इसमें दी हुई है उस एडवाइस को जो आप पढ़ेंगे तो अगर आप एक लोअर मैनेजमेंट में हो, अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो अपनी जर्नी तो आपको नहीं समझ में आएगा. ठीक है कि ये क्यों बोल रहा है, क्या बोल रहा है. लेकिन जब आप एक सर्टेन लेवल पे पहुंच जाते हो, अगर मान लो आप सीएक्सओ, अगर आप फाउंडर हो और if you are already administering people, if you have people working under you, you're managing stuff, then this book will make sense for you. So there are a few key takeaways of this book. Basically, yaar, Marshall Goldsmith talks about. So this is a book by Marshall Goldsmith. He's an executive coach. So ये CXO levels को ही coach करता है, right? So this book basically focuses on personal and professional development, emphasizing on the habits and behaviors that lead to success at one level. He basically says that whatever habits and behaviors that have been working for you till now might not work for you once you have gone beyond a certain level. मतलब once you have graduated to phase 2, as they say, right? Let me just see मैंने notes बनाए हैं इसके. एक मिनट.
Okay, yeah. So सबसे पहला इनका टॉपिक है the first thing which basically they talk about is around self awareness, right? So Goldsmith Sohail, I'm emphasizes. not able to see the notes. If you are नहीं नहीं, I'm not sharing the showing the notes. notes. मैं रुक जा, Okay, मैं cool. notes भी दिखा देता हूँ. No, that's Let me fine. I just saw a gray screen. That's why I thought to ask. नहीं नहीं दिखाता हूँ. Let me just show. दिखा दे रहा हूँ मैं आप लोगों के इसके लिए. मेरी स्क्रीन दिख रही है. अच्छा, ये बंद हो गया है क्या ये मेरे साथ? अच्छा चलो ये let me just मेरा कैमरा भी बंद हो गया होगा नहीं? वेट, let me यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से let me ओके. तो देखो, सबसे पहला है is around self awareness. Self awareness. Goldsmith emphasizes the importance of self awareness in personal professional development. So what they basically talk about when I say self awareness is the fact that a lot of times we basically have impulses to do a lot of stuff. When you are at a certain level, you can't act on your impulses. You need to be very very aware कि मैं ये चीज जो बोलूंगा उसका एक्चुअली रिपरकशन क्या होगा. बिकॉज मेनी ए टाइम्स अगर मान लो आप एक कंपनी रन कर रहे हो, तो आप एक सर्टेन इंडिविजुअल को जो बोलते हो ना, वो एक्चुअली रिपल इफेक्ट करता है पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन में. एंड a lot of things might happen which you might not even think about, but it might actually be a ripple effect of something which एक दिन तुमने जाकर किसी के ऊपर के चिल्ला दिया, ठीक है, एंड चार कंपनी चार 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 दूसरे लोग नौकरी छोड़ के चले गए. ठीक है. तो आई एम जस्ट गिविंग अ वेरी वियर्ड एग्जांपल, बट बेसिकली पॉइंट इज you need to be a little bit self aware of what you guys are doing, and basically understanding your strengths and weaknesses. This is also very very interesting point. So what Marshall Goldsmith talks about is ki till the time you are an individual contributor, your life is chill because you are responsible for your work. But the moment you're managing people, you will realize that you probably are not good for all the kind of work, and you will need people to manage certain things. You need to understand your strengths and your weaknesses and then allow other people to take care of those things. सारी चीजें 100% हर चीज शायद ना हो पाए सही से, लेकिन 80% होगी, and you have to be okay with that. Then there is feedback. So अगर आपको कोई नेगेटिव फीडबैक देता है तो people we usually don't take the feedbacks in the right manner. So what basically Marshall Goldsmith says that you should look for feedback from the right people and you should give feedback in the right way. Constructive feedback helps you identify blind spots and areas where you can improve. Embracing feedback, using it for self improvement is a key theme in the book. Then there is avoiding common pitfalls. So the book discusses common behaviors that can hinder personal and professional progress, such as reluctance to change, a need to win at all costs, and the inability to listen effectively. ये मतलब सारे लोग बोलते हैं you have to be a good listener, right? Everybody says that pick the right battles to fight. Everybody says that change is the only constant. Much more easier to say than do. But these are the basic common pitfalls यार. मतलब ये एक लेवल के बाद ना, I think it's expected from you if you're a mature individual कि यार ये सारी चीजें हैं और आपको ऐसा रहना है. तो these are basic common pitfalls which you should avoid. Then there is the importance of humility. आप जितने ऊपर जाते हो उतना ज्यादा आपको हम्बल होना ज्यादा जरूरी होता है. ये सारे लोग बोलते हैं, but this book actually gives you a few actionable items on your so the moment, I mean, what I'm trying to emphasize is कि यार at a managerial level, at a CXO level, behavior is everything because work takes care of itself, right? Work takes care of itself, and you basically would need to be a little bit more focused on how you behave in front of who.
And then there are the other two, which is focus on relationships. You need to build lasting relationships. कल के हमारे इवेंट में भी मेरा यही कहना था, यार आप ना एक फाउंडर होके ट्रांजैक्शनल नहीं हो सकते हो। आप कस्टमर भी अगर बना रहे हो तो आप रिलेशनशिप पहले बिल्ड करो, उसके बाद आप कस्टमर बनाओ। आप इन्वेस्टर से फंडिंग लेने जा रहे हो तो वहां पे भी आप पहले रिलेशनशिप बनाओ, उसके बाद आप पैसे मांगो। क्योंकि एक लेवल के बाद ना 100 रुपए की बात नहीं होती। एक लेवल के बाद ये होता है कि यार इस बंदे के साथ मैं काम कर पाऊंगा या नहीं, इस बंदे के साथ if ever this person, if I am in need, will this person be able to help me in, and you need to be there. So you need to focus a little bit on relationships. The book highlights the impact of interpersonal dynamics on your ability to advance in your career. Building a strong support network and treating others with respect can be instrumental in your ongoing success. Then there is the last point, which is um, behavioral change requires effort. अगर आप अपनी behavior, अगर मतलब people say that people don't change. Of course, people don't change, but you can change yourself, and that needs to happen in a conscious manner, right? So, अगर you will not change, but your propensity of change can change the way you behave in front of people. आप में अगर वो malleability है, आप में अगर वो ductile strength है, you basically can mold your behavior. अंदर से आप चाहे जैसे भी हो, बाहर से लोगों के साथ आप जिस तरीके से डील करते हैं, वो अगर आप चेंज करना चाहें तो वो एक दिन में नहीं होती। अगर आप सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस वाली बात है कि हाँ करना है ये चीज, एंड देन इट टेक्स टाइम। ओवरऑल आई थिंक दिस इज वन वेरी वेरी छोटा सा पतला सी किताब है। दिस इज हार्डली व्हाट 100 पेजेस, या ना, 250 पेजेस, बट छोटी सी किताब है। And this is said to be, again, this book goes in the same league as the Dale Carnegie books, the 7 Habits of Highly Effective People and all of these. And really good people for anyone who is right now in a management level or a CXO level role. This helps you grow both personally and professionally, and basically help you grow your business as well as your relationships, your network, and make good friends here. Have a more happier life, so to speak. I think इतना ही है आज के लिए. Hopefully today's session was something which you people like. Thanks a lot, Sandhya, Mridul, for joining in. Sandhya, Mridul, Raj for joining in. And we'll see you guys again next week at the same place at the same time. संध्या, अगर आप टाइम निकाल पाओ तो आप जरूर आना. I really enjoyed Sandhya, Mridul, both of you. I really enjoyed your suggestions, your opinions and your perspectives on the news. And I think अगले हफ्ते कुलमनी भी वापस आ जाएंगे, सौरभ भी वापस आ जाएंगे, तो we can do a lot more banter. With Sure. that, I think Sure. we can just close the session for today. Thanks a lot for sticking around for a good 100 minutes. We'll see you guys again next week. Take care. Good Thank night. you. Thanks, everyone. Bye. 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 Thanks, everyone. Thank you.